डू यू नो कंपनीज अपने स्टाइल के हिसाब से डिबेंचर्स इश्यू करती है. सम कंपनीज इश्यू देम एट par, some others issue them at premium, whereas some issue them at discount. In today's session we will be learning all those stylish entries for the topic issue of debentures for cash. Hello everyone and welcome back to the commerce element. Without wasting time, let's talk to the point. Now you might be knowing that companies जब भी कभी डिबेंचर इशू करती है, कंपनी 3 वेज में डिबेंचर इशू कर सकती है. कंपनी कैन इशू डिबेंचर एट पार, दे कैन इशू डिबेंचर एट प्रीमियम, दे कैन इशू डिबेंचर एट डिस्काउंट इवन. बिकॉज डिबेंचर एक बोरोड फंड की सिक्योरिटी है. आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स कंपनी उन डिबेंचर्स को रिडीम भी करेगी. एंड दैट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैन बी इन 2 कंडीशंस. Either the redemption will be done at par or the redemption will be done at premium. So considering all these combinations of issue, let's see some of the stylish combination of these entries. Now supposing we assume that company is issuing only one debenture. Company is issuing 9% debenture of 100 each. If the company issues the debenture at par, then of course the company will issue it at 100 rupees. If the company is issuing debenture at premium, suppose company will be taking 10 rupees premium per debenture. If the company is issuing this debenture at discount, say suppose company will give 5 rupees discount per debenture, and if the company is going to redeem it at par, ऑफ कोर्स कंपनी 100 के डिबेंचर का 100 ही रिडीम करेगी. बट अगर कंपनी उन डिबेंचर्स को एट रिडम्पशन प्रीमियम करती है, तो सपोज द कंपनी इज कंसीडरिंग 3 रुपीज एज रिडम्पशन प्रीमियम. नाउ कंसीडरिंग ऑल दीज कंडीशंस, you can have 6 different combinations of stylish entries. Let's see all of them one by one. Now suppose the company is issuing the debenture at par, that is I at par, they will redeem it at par as well. 100 rupees की फेस वैल्यू का डिबेंचर जब कंपनी इश्यू करेगी, कंपनी 100 में इश्यू करेगी. जब भी कभी कंपनी उसे 5 years 10 years के बाद रिडीम करेगी, कंपनी 100 में ही रिडीम करेगी. You are supposed to pass entry for issue of debenture only. So when the company will issue the debenture, company will pass the entry bank account debit to debenture application and allotment account. Because par पे issue किया, company will get 100 rupees in its bank account. Narration आपकी screen पे flash करेगा. The narration will be being amount received on debenture application and allotment. Now what the company will do? Immediately debenture application and allotment account same amount से पहले close करेगी. So debenture application and allotment account debit 100 रुपीज से ओपन किया था, 100 से क्लोज करो. ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला अमाउंट कहाँ लेके जाओगे? यू विल ट्रांसफर इट टू डिबेंचर. सो टू 9% डिबेंचर अकाउंट 100. So like this, company will pass 2 entries. Again, the narration for this will flash on your screen. It will be being application and allotment amount transferred to debenture. So like this, whenever the company is issuing debenture at par, which are to be redeemed at par also, company issue के time पे ये 1 and 2 entries pass करेगी. This is the first style of issue of debentures. Let's see the second style. Under second style, company will issue the debenture at premium and it will redeem it at par. 100 रुपीज का डिबेंचर कंपनी जब इश्यू करेगी, प्रीमियम पे इश्यू करेगी, मतलब 10 रुपीज पर डिबेंचर एक्स्ट्रा अमाउंट लेगी. एंड जब 5 साल 10 साल के बाद रिडीम करेगी, इट विल रिडीम इट एट पार. मतलब 100 लिया था, 5 साल 10 साल के बाद कंपनी आपको रीपे भी 100 ही करेगी. सो इफ वी कंसीडर दिस स्टाइल, देन व्हाट काइंड ऑफ एंट्रीज द कंपनी विल पास?
The first entry always will remain common whichever style कंपनी डिबेंचर इश्यू करने के लिए अडॉप्ट करती है. The first entry always will be bank account debit to debenture application and allotment account. अमाउंट फॉर फर्स्ट एंट्री एवरी कंडीशन के बेसिस पे चेंज होगा. ना यहाँ पे कंपनी डिबेंचर प्रीमियम से इश्यू कर रही है, सो कंपनी को 100 रुपीज फेस वैल्यू के टूवर्ड्स मिलेगा प्लस 10 रुपीज प्रीमियम के टूवर्ड्स भी मिलेगा. हम मान के चलते हैं कि कंपनी ये पूरा पैसा वन गो में एक ही साथ मंगवा रही है, सो 110 कंपनी विल गेट 110 इन इट्स bank account for debenture application and allotment. Sorry, it will be 110. Narration will be same, being amount received on debenture application and allotment. Immediately you will be closing debenture application allotment account with the same amount. So the next entry will be debenture application and allotment account debit. 110 से ओपन किया था, 110 से इमीडिएटली क्लोज कर दो. ये क्लोज करके एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला अमाउंट कहाँ पे लेके जाओगे? टू 9% डिबेंचर. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर 9% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट, 13% डिबेंचर अकाउंट, व्हेनेवर डिबेंचर अकाउंट विल कम इनटू इफेक्ट, इट विल ऑलवेज कम इनटू इफेक्ट विद फेस वैल्यू. सो 110 में से यू विल ट्रांसफर 100 टूवर्ड्स 9% डिबेंचर. तो फिर 10 एक्स्ट्रा मिले यहाँ पे, वो किसके थे? ऑब्वियसली वो SPR के थे, बिकॉज यू इश्यू द डिबेंचर एट प्रीमियम. सो टू SPR account 10. Now this time the narration will be being amount transferred to 9% debenture and SPR. So like this, the second style of company's issue is also over. Let's see the third one. Under third style, company will issue the debenture at discount. It will redeem it at par again. The first entry always in any style will remain same. It will be bank account debit to debenture application and allotment account. Now amount will change. 100 का डिबेंचर कंपनी ने 5 रुपीज डिस्काउंट देके इश्यू किया, सो ऑफकोर्स द पब्लिक विल पे 95 रुपीज इन कंपनीज बैंक अकाउंट. So bank to application allotment, it will be 95 this time. Narration again the same, being amount received on debenture application and allotment. Immediately you will be closing debenture application and allotment with same amount, 95 in this case. So the next entry will be debenture application and allotment account debit. 95 से ओपन किया था, 95 से क्लोज करो. नाउ 100 रुपीज का डिबेंचर आपने 5 का डिस्काउंट देके 5 रुपए कम लेके जनरल पब्लिक को दिया, सो यू आर एट अ लॉस ऑफ 5 रुपीज. किस चीज का लॉस है? डिस्काउंट का लॉस है. एंड द रूल सेज दैट लॉसेस अकाउंट डेबिट. एज ऑफ दैट इट विल बी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट. 5 रुपीज का डिस्काउंट का लॉस हुआ, दैट हैज बीन डेबिटेड टू अगेन 9% डिबेंचर अकाउंट. इट विल बी ऑलवेज विद 100 rupees which is its face value. Again the narration will be same, being application allotment amount transferred to 9% debenture. Like this the third style is also over. Now under fourth style कंपनी क्या करेगी? इश्यू करेगी पार पे, एंड जब 5 साल 10 साल के बाद रिडम्पशन करेगी, द रिडम्पशन विल बी डन एट प्रीमियम. So when the company will issue the debenture, 100 का debenture था, 100 rupees ही लेगी. Entry will remain same. It will be bank account debit to debenture application and allotment account. आपने पार पे इश्यू किया तो 100 के डिबेंचर का आपको 100 ही मिला.
being amount received on debenture application and allotment. Immediately close this. It will be debenture application and allotment account debit. 100 से ओपन किया था, 100 से क्लोज कर दो. रिडम्पशन प्रीमियम के साथ करने का क्या मतलब हुआ? आज आप मुझे 100 रुपीज दो, 5 years के बाद आई गिव यू 100 एज 103. एज अ कंपनी मैं आपको 3 रुपीज एक्स्ट्रा दूंगी. आपको तो एक्स्ट्रा मिला, बट एज अ कंपनी वो 3 रुपीज का लॉस तो मुझे हुआ. वो 3 रुपीज का लॉस मुझे कब होगा? 5 साल के बाद, जब मैं आपको 3 एक्स्ट्रा दूंगी. But remember, 11th standard you might have learned the principle of prudence, या the principle of conservatism, which says that losses की entry उसको जब identify करो तभी करो, ना कि future में जब आप actually में loss incur करते हो. So considering the principle of prudence, ये 3 rupees का loss जब मैंने issue किया तब से डन हो गया कि 5 साल के बाद होना ही है, and thus I will make that losses entry at the time of issue only. So my entry will be loss on issue of debenture account debit. मैं 3 रुपीज का रिडम्पशन प्रीमियम दूंगी, एंड दस 3 रुपीज का मुझे लॉस होगा 5 साल के बाद, बट एज ऑफ प्रूडेंस आई विल बी रिकॉर्डिंग इट जस्ट नाउ व्हेन आई एम इशूइंग द डिबेंचर. एंड 9% डिबेंचर अकाउंट कैसे भी इश्यू करो, कैसे भी रिडीम करो, इट विल बी ऑलवेज विथ फेस वैल्यू. अब ये जो भी 3 रुपीज का लॉस है वो किसका है? रिडम्पशन प्रीमियम का. सो जिस भी किसी एंट्री में आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन करो, जितने भी अमाउंट से ओपन करो, सेम एंट्री में वो लॉस को किसके अगेंस्ट में एडजस्ट करोगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. ₹3. So remember that loss will get adjusted with the same amount in the same entry towards premium on redemption. So this was the 4th style of entry. Now going towards the 5th style. In the 5th style, the company will issue the debenture at premium, which is to be redeemed at premium as well. सो 100 का डिबेंचर कंपनी जब इश्यू करेगी 10 रुपीज के प्रीमियम्स के साथ इश्यू करेगी, जब रिडीम करेगी 3 रुपीज के प्रीमियम के साथ रिडीम करेगी. सो इश्यू के टाइम पे द एंट्री विल रिमेन सेम. इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. 100 का डिबेंचर प्रीमियम से इश्यू किया, सो ऑफ कोर्स आपकी बैंक में 110 मिला होगा. सो इट विल बी 110. इमीडिएटली डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट सेम अमाउंट से क्लोज करो. सो नेक्स्ट एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. 110 से ओपन किया था, 110 से क्लोज इट. नाउ प्रीमियम से रिडम्पशन होने वाला है. 5 साल के बाद आपको 3 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं. लॉस तो 5 साल के बाद होगा, बट प्रूडेंस के अकॉर्डिंग उसकी रिकॉर्डिंग अभी होगी. सो इट विल बी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट. आपको 3 रुपीज का लॉस होगा टू 9% डिबेंचर अकाउंट. कैसे भी इश्यू किया हो, कैसे भी रिडीम करो, डिबेंचर विल ऑलवेज कम विथ फेस वैल्यू. 100 रुपीज के डिबेंचर के एप्लीकेशन के टाइम पे 10 जो एक्स्ट्रा मिले वो किसके थे? ऑफ कोर्स वो SPR के थे. तो टू SPR अकाउंट 10. एंड आई टोल्ड यू लॉस ऑन इश्यू, अब जिस भी एंट्री में ओपन करो, जितने भी अमाउंट से ओपन करो, सेम एंट्री सेम अमाउंट से वो एडजस्ट हो जाएगा towards premium on redemption. So to premium on redemption account, it will be 3, and this entry is over as well. Now if we move to the last case, company जब issue करेगी, company will issue the debenture at discount
and these debentures will be redeemed now at premium. So this is the sixth and the last style जिसमें कंपनी अपने debentures को issue करेगी. First entry anyways will remain same. It will be bank account debit to debenture application and allotment account. 100 का डिबेंचर आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया और आप 5 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हो. सो आपको जनरल पब्लिक 95 रुपीज देगी. सो यू विल हैव 95 इन योर बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. इमीडिएटली नेक्स्ट एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट सेम अमाउंट से क्लोज करो. दिस यू हैव टू रिमेंबर एवरी टाइम. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 से ओपन किया था, 95 से डेबिट करके क्लोज कर दिया. अब आप 100 के डिबेंचर के एप्लीकेशन के टाइम पे 95 ही मिले तो 5 रुपीज का लॉस हुआ. किससे लॉस हुआ? बिकॉज आपने डिस्काउंट दिया. सो इट विल बी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपीज का. आपने बोला है कि हम प्रीमियम रिडम्पशन से करेंगे. 5 साल के बाद 3 रुपीज एक्स्ट्रा दोगे. अभी से लॉस डन हो गया. प्रूडेंस के हिसाब से उसकी रिकॉर्डिंग भी अभी करोगे. सो इट विल बी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3 रुपीज टू 9% डिबेंचर अकाउंट. कैसे भी इश्यू करो, कैसे भी रिडम्पशन करो, डिबेंचर में ऑलवेज 100 रुपीज दैट इज फेस वैल्यू विल गेट ट्रांसफर्ड. अगेन आई टोल्ड यू लॉस ऑन इश्यू जिस भी एंट्री में ओपन होता है सेम अमाउंट विल गेट एडजस्टेड टुवर्ड्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. सो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 3. And you are done with all the 6 style of entries. If you want to take screenshot, take it, and then we will be discussing इन 6 styles को use करके बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता है. Take the screenshot first. Now, if we proceed with sums, the basic entries will remain same, but the number of debenture and the face value of debenture will get added on. प्रीवियस स्क्रीन में हमने जो भी 6 स्टाइलिश एंट्रीज करी वो एक डिबेंचर के इश्यू के रिलेटेड एंट्रीज करी. नाउ यू हैव मेनी डिबेंचर्स टू बी इश्यूड. सो व्हाट यू विल बी डूइंग ऑलवेज इज a 15,000 number of debentures into 50 rupees each debenture. सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो मेक आउट द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर. बिकॉज आपको जो भी 10% प्रीमियम, 5% डिस्काउंट, से सपोज 7% रिडम्पशन प्रीमियम, जिसके भी परसेंटेजेस दिए दैट परसेंटेजेस ऑलवेज विल बी ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर. सो फॉर अ सेफर साइड ऑलवेज फेस वैल्यू का अमाउंट मेक आउट कर लो एंड देन जो भी परसेंटेजेस दिए दैट परसेंटेजेस विल बी कैलकुलेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट. एज ऑफ आवर केस द फेस वैल्यू विल बी 15,000 debentures of 50 each. So 15,000 into 50 we are issuing debentures of rupees 7,50,000 face value. And now the basic entry as of the previous 6 styles will remain same. ये कौन सा केस है? प्रीमियम से इश्यू किया, पार से रिडम्पशन करना है. We learn that the first entry always will be same. So it will be bank account debit to debenture application and allotment account. Now because आपने इश्यू प्रीमियम से किया है, आपको 750 फेस वैल्यू के टूवर्ड्स मिलेगा प्लस 10% प्रीमियम के टूवर्ड्स भी वन गो में पैसा मिल जाएगा. 10% किसका? 10% फेस वैल्यू का. सो 7,50,000 प्लस 10% ऑफ इट प्लस 75,000 एक्स्ट्रा आपको आपके बैंक अकाउंट में 8,25,000 रुपीज मिलेंगे.
being amount received on debenture application and allotment. Immediately close debenture application and allotment with the same amount. So your second entry will be debenture application and allotment account debit. Same 825 से to this time you have 10% debenture. So the debenture's name will be 10% debenture account. I told you whenever debenture account will come into effect, it will always come into effect with face value. So it will be 7,50,000. 750 के debenture के 825 मिले, 75 एक्स्ट्रा मिले, किसके मिले? ऑफ कोर्स आपको वो प्रीमियम के मिले. तो टू SPR account 75,000 and like this you are done with 3 marker entry. So majority of times बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं डिबेंचर्स के लेके, उसमें से this type of question is more expected. Let's see another question. Now the second question says that rupees 6 lakh 11% debentures of 500 each issued at 10% discount to be redeemed at 5% premium. So इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? Here directly face value of debentures is given, whereas here आपको number of debentures दिए थे. तो फिर आपने number of debenture को per debenture face value से multiply किया and then you arrived at total face value of debenture, जिसके हमने 10%, 5% जो भी डिस्काउंट प्रीमियम, रिडम्पशन प्रीमियम के परसेंटेजेस दिए, टोटल अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू के परसेंटेजेस फाइंड किए. नाउ हियर डायरेक्टली आपको टोटल अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू इज गिवन एंड आपको पर डिबेंचर फेस वैल्यू इज ऑल्सो गिवन, सो दैट अगर आप अलर्ट नहीं हो, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो, then like this you will multiply 6 lakh debentures into 500 again. तो फिर 6 lakh rupees into rupees 500, rupees square हो जाएगा, तो that will be wrong. So keenly check whether आपको rupees 6 lakh के debentures दिए हैं या number of 6 lakh debentures दिए, and then proceed further. So for this sum our face value is directly given, which is 6 lakh rupees. तो ये जो भी आपको डिस्काउंट का परसेंटेज, रिडम्पशन प्रीमियम का परसेंटेज है, दैट इज ऑन 6 lakh. The first entry anyways will remain same. It will be bank account debit to debenture application and allotment account. 6 lakh की फेस वैल्यू का डिबेंचर आपने 10% डिस्काउंट से इश्यू किया. 6 lakh का 10% 60,000. 6 lakh के डिबेंचर्स आपने 60,000 डिस्काउंट से इश्यू किए एंड thus you got 5,40,000 in your bank account. Immediately close the application and allotment account with same amount. So second entry will be debenture application and allotment account debit. 540 से ओपन किया था, क्लोज इट विथ 540. नाउ आपने डिस्काउंट दिया है, सो डिस्काउंट आपका लॉस है, सो लॉसेस अकाउंट डेबिट के हिसाब से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट इट विल बी 60,000. अब आपने बोला है कि हम रिडम्पशन भी प्रीमियम से करेंगे, 5 साल के बाद आपको 5% का लॉस एक्स्ट्रा होगा. प्रूडेंस कहता है उसकी रिकॉर्डिंग अभी करो. सो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट it will be 5% of 6 lakh. It will be 30,000. 2, you have 11% debentures this time. So to 11% debenture account, always with face value, which is 6 lakh rupees. And I told you that loss on issue जब भी कभी जिस भी एंट्री में ओपन करो, सेम एंट्री में it will get adjusted towards premium on redemption. So to premium on redemption account 30 से लॉस ऑन इश्यू ओपन किया था,
30 से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के टुवर्ड्स उसे एडजस्ट कर दो एंड यू आर डन। एवरी टाइम व्हेनेवर यू पास जर्नल एंट्री सी टू दैट आप नरेशन लिखते हो, अदरवाइज मार्क्स कट होंगे। नाउ इफ इट इज सिंपली अ 3 मार्क का क्वेश्चन, 2 एंट्रीज करो 3 मार्क्स लेके जाओ, बट समटाइम्स दे आस्क इट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एज 4 मार्क का क्वेश्चन ऑल्सो। सो फिर आपको क्वेश्चन में बोला होगा जर्नलाइज and prepare loss on issue of debenture account and prepare discount on issue of debenture account। कोई भी एक अकाउंट बनाने को बोलेंगे। So note one thing that this 60,000 and 30,000 a total of 90,000 as such आपका loss on issue of debenture ही हुआ। 60 आपका loss हुआ towards discount and 30 आपका loss हुआ towards redemption premium। सो रिमेंबर, जब भी कभी आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाने को बोले, यू विल मेक दैट अकाउंट विथ 90,000। लेट्स सी हाउ दैट अकाउंट इज मेड। सपोज हम टी फॉर्म में अकाउंट बनाते हैं फॉर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। दिस इज द डेबिट पार्ट एंड दिस इज द क्रेडिट पार्ट। Now total loss कितना डेबिट हुआ? 90,000। This 90,000 is made up of two amounts, 60 and 30। So loss on issue of debenture account में हम 90,000 डेबिट करेंगे, which is made up of two figures 60 and 30। 60,000 किसका लॉस हुआ? बिकॉज आपने डिबेंचर डिस्काउंट से इश्यू किया उसका। सो इसका पर्टिकुलर होगा 11% डिबेंचर। आपको 30,000 का किसका लॉस हुआ? बिकॉज आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिया, सो 30 का लॉस हुआ। सो इसका पर्टिकुलर होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लाइक दिस यू विल बी एंटरिंग अ टोटल ऑफ 90,000 का लॉस एंड नॉट ओनली 30,000 का लॉस ऑन इश्यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर डिस्काउंट ऑन इश्यू पूछा होता तो आप खाली डिस्काउंट ऑन इश्यू का 60,000 का अकाउंट बनाते। सी फॉर सपोज डिस्काउंट ऑन इश्यू पूछा है, यू विल बी मेकिंग डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट एंड यू विल बी मेकिंग एंट्री फॉर दिस 60,000 ओनली। तो फिर आप डिस्काउंट अकाउंट में 60,000 डेबिट करते, इट वुड हैव बीन डेबिटेड टू 11% डिबेंचर। बट अगर लॉस ऑन इश्यू बोला है तो ये दोनों आपके लॉस ही है। सो यू विल अकोमोडेट बोथ द अमाउंट, अ टोटल लॉस ऑफ 90। वंस आपने 90 एंटर कर दिए, देन क्लोज द अकाउंट एट द एंड 90। यहाँ पे कुछ नहीं है, सो यू विल हैव अ गैप ऑफ 90 ऑल्सो। नाउ अगेन रिमेंबर, एज ऑफ कंपनीज एक्ट, ये जो भी आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का टोटल अमाउंट है, उसको एज सच यू आर सपोज टू एडजस्ट, यू आर सपोज टू राइट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एसपीआर के अगेंस्ट में राइट ऑफ करना होता है। अगर आपके पास ये 90 का लॉस राइट ऑफ करने के लिए एसपीआर की बैलेंस नहीं है या इनफ बैलेंस नहीं है, देन दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड या विल बी रिटर्न ऑफ इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। फिलहाल हमारे पास सम में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि आपके पास एसपीआर की बैलेंस है, सो वी विल ट्रांसफर दिस 90,000 टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड योर लॉसेस अकाउंट विल गेट क्लोज्ड। सपोज आपको बोला होता क्वेश्चन में कि कंपनी इज हैविंग एन एसपीआर बैलेंस ऑफ ₹60,000, तो फिर 90,000 जब ये राइट ऑफ करते, आप 60,000 रुपीज एसपीआर में राइट ऑफ करते एंड रिमेनिंग 30,000 यू माइट हैव रिटर्न ऑफ अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो दिस कुड हैव बीन द एंट्री जहां पे 2 लिखा है, 90 को क्लोज करके ट्रांसफर करने के लिए। सो एज फार एज द कंपनी इज हैविंग बैलेंस इन एसपीआर और इट इज हैविंग इनफ बैलेंस इन एसपीआर, पूरा अमाउंट ऑफ लॉस एसपीआर से एडजस्ट होगा। अगर एसपीआर की बैलेंस नहीं है, जैसे हमारे सामने इनिशियली नहीं है, या एसपीआर की इनफ बैलेंस नहीं है जैसे इस केस में,
तो फिर यू विल राइट ऑफ अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L, या अगर इनफ बैलेंस नहीं है तो जितनी बैलेंस है SPR की यूटिलाइज करो, रिमेनिंग लॉस you adjust against statement of P&L. I hope this is clear. And this type of entries of debentures are more expected in your boards paper, and it is very easy to score 3 on 3 or 4 on 4 marks on this. So do practice them well. If you have any doubt, any question, any queries, then you can ping me in the comment section and I'll get back to you. If you want to take the screenshot, you can take it. In the next session, we will be discussing about issue of debenture for consideration other than cash. So until then, stay tuned and goodbye.